खालिद असलम की एक खुसूसी रिपोर्ट। लीडर सियासत से न्यूज़ रीडर रेहाना तबस्सुम के साथ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। एक दुर्लभ उपलब्धि। नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज ने 20 साल की यात्रा में 20,000 से अधिक न्यूरोसर्जरी की है। बेंगलुरु, सितंबर 2024। नारायण हेल्थ सिटी, बेंगलुरु में नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज ने अपनी 20 साल की यात्रा में 20,000 से अधिक न्यूरोसर्जरी सफलतापूर्वक करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नवाचार और रोगी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संस्थान जटिल न्यूरोसर्जिकल मामलों को सटीकता और विशेषज्ञता के साथ इलाज करने में सबसे आगे रहा है। संस्थान की शुरुआत 2004 में निदेशक डॉक्टर थिमप्पा हेगड़े ने की थी और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। 2 दशक की यात्रा की उपलब्धियों पर टिप्पणी करते हुए नारायण हेल्थ में क्लिनिकल लीड और वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जरी डॉक्टर कोमल प्रसाद ने कहा, पिछले 2 दशकों में नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज न्यूरोसर्जिकल देखभाल में अग्रणी बन गया है। हमारी टीम ने अपनी स्थापना के बाद से सालाना औसतन 1,000 सर्जरी की है, जिससे हम देश के अग्रणी संस्थानों में से एक बन गए हैं। हमारी न्यूरोसर्जिकल क्षमताएं न्यूरोनकोलॉजी, खोपड़ी आधार सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, मिर्गी सर्जरी, कार्यात्मक न्यूरोसर्जरी और न्यूनतम इन्वेसिव स्पाइनल सर्जरी तक फैली हुई है। संस्थान की क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला इसे न्यूरोसर्जरी में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जिसमें प्रौद्योगिकी, पेशेवर या नैदानिक उत्कृष्टता और रोगी प्रथम दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी संस्थान में ध्यान का एक प्रमुख क्षेत्र है, जो अपक्षयी रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से लेकर रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर और आघात से संबंधित चोटों तक की कई स्थितियों को कवर करती है। रोबोटिक स्पाइनल सर्जरी नई जोड़ी गई उन्नत तकनीक है जो सटीकता को आगे बढ़ाती है। बाल चिकित्सा न्यूरोसर्जरी बच्चों में न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को संबोधित करती है, एक और क्षेत्र है जहां संस्थान जन्मजात मस्तिष्क विकृतियों और ट्यूमर का इलाज करने में उत्कृष्टता। डॉक्टर शिबू पिल्लई, वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जरी, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, ने कहा, हम अत्यधिक जटिल बाल चिकित्सा सर्जरी करते रहे हैं और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की मैपिंग। Okay, sir, now majority of the government of India is trying to spend crores and crores on the healthcare. Are you, Narayana, anyway connecting with government of India? So they pay you and you take this visit to rural, bring people, any communication mode, preventive healthcare? Yeah, that's always there, right from its inception. We are the pioneers in the micro-insurance schemes, and from those days we are following it up, and whenever the new scheme comes, it's made available. Okay, so people in this case, performing a surgery on a child, how difficult and how challenging it is? Definitely, operating on small children is very challenging. One of the most difficult things is because the children have very little blood in them. So even a small amount of blood loss can be seriously life-threatening. So the aim is to do it slowly, carefully, so that minimum amount of damage happens and the child is safe. More than that, I would also, answering your previous question about cost. Yes, sir. With children, it is very critical, because often what happens, these small babies, they will have young families. The families are just beginning. Their income is very little. So even a middle income person may not be able to afford these things. And looking after children is the responsibility of the entire city or the community. So there is an African saying that it takes a village to take care of a child. So all of us have to take part in bringing these children to safety. Whenever the family lands in trouble with a small child who is ill, we have to all contribute to that. You may often see requests for help, and whoever can do whatever small amount of help, that will be important to save a child. So that is, I think, very important. The community has to come together to save these children, because it can be done technically, but
that needs some financial support also from the community. Sir, we have Narayana Health out of India as well. The patients come from abroad to India. People do come. Lot of children come from abroad also, and we have been helping those children also, and quite successfully too. Africa, Malaysia, Southeast Asia, many children have been coming. Whenever you come to Narayana Hridayalaya, you will see most of our patients are really poor. They are really poor. Many of them come from rural Karnataka. Fortunately, there are various government schemes for BPL patients, and if you ask them, most of them don't have to pay anything. So because of these schemes, we are able to offer the best of healthcare to really poor people. Additionally, we get a lot of patients from Bangladesh. Bangladesh has been one country where we get so many patients, and even all of them, they are also very poor. The beauty of this hospital, and this is the vision of Dr. Devi Shetty, when they come to our hospital, within whatever budget they have, and we have a system, somehow they are able to manage the cost, and patients are not refused treatment just because of their inability to pay. And that vision has been working for us. Kamal sir, last question. You had mentioned about other places where Narayana has. We are in more than 20 places around India. So I was fortunate to start a unit in Mysore, the Neuro Surgeries, same kind of facility to answer your question of how we reach people in other places. And your other part is about other countries. We have one unit in Cayman Islands, that is in the Caribbean islands, very close to American border. That is also a very growing unit where I was fortunate again to start neurosurgery services there. So to set up similar kind of to cater to people in the Caribbean area and from US. Thank you.